Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. We had discussed the physiology of pregnancy in previous lecture. Today I am going to discuss the process of delivery of the baby, which we term as parturition. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ट्रांसलेशन पहले देख लें फिर बात करते हैं. और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है. ववस्सैना इंसान, हमने इंसान को हुक्म दिया है, वसीयत की है, बताया है. बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का. हमलतु उम्मुहु कुरहम व वदअतु कुर्रा, अल्लाह पाक इसकी एक वजह भी बयान कर रहे हैं कि उसकी माँ ने उसको बड़ी मुश्किलात में, बड़ी तकलीफ सह कर उसको अपने पेट में रखा, उसका हमल उठाया और बड़ी तकलीफ सह कर उसने उसको डिलीवर भी किया, उसको जना भी. उसकी माँ ने उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ झेल कर, तकलीफ बर्दाश्त करके उसको जना, उसको डिलीवर किया. ये दोनों प्रोसेसेस बहुत डिफिकल्ट काम है. डिलीवरी ऑफ द बेबी भी और प्रेगनेंसी थ्रू आउट दोज 40 वीक्स, वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द फीमेल लाइफ इज दिस प्रेगनेंसी. कि आप सिर्फ 1 किलो वजन आप उठा के 1 घंटे तक खड़े हो तो 24 पाउंड एट लीस्ट वेट गेन वो करती है, और इतना वजन फॉर सेवरल मंथ्स शी हैज टू बियर. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. और अल्लाह इसको याद दिला के कह रहे हैं कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो. और फिर अल्लाह पाक फिर अगली बात भी बता रहे हो, वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, उसके हमल का और इसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है. ये 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स ये कर लें और प्लस के सम मंथ 21 मंथ्स, नियर अबाउट 2 years. तो इसके मुताबिक ये 30 महीने का टाइम है प्रेगनेंसी का भी और दूध पिलाने का भी. तो ये हमें अल्लाह पाक इसकी समझ दे और इस पे अमल करने की तौफीक, अमल क्या, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए. So we are going to talk about this difficult stage of the female reproduction, that is the parturition, delivery of the baby. Parturition means giving birth, delivery of the baby जिसको हम कहते हैं. The labor is the process by which there are strong uterine contraction. Uterus contracts very forcefully, which causes expulsion of the baby. Very strong contractility. How this happens? How this uterus gains more contractility and very powerful contraction towards the end of after 40 weeks of the pregnancy, this happens. There are 2 important factors which cause this onset of labor and then continuation of this labor. Which 2 important factors. One is the hormonal balance, progressive hormonal changes which lead to the more and more excitability towards the end of the pregnancy. Throughout pregnancy there are weak contractions in the uterus which we named as Braxton Hicks contraction, but they are weak contraction, not strong contraction, not strong enough to push the baby into the cervix, but weak contraction are present throughout the baby. And with the movement of the baby, contraction they can increase, but they are not strong enough to push the baby into the for delivery. So progressive hormonal change lead to the more and more excitability and contractility of the uterus, which culminate into the very forceful contraction, which we term as the labor contraction. Those Braxton Hicks contractions are converted into labor contraction. Second factors is the progressive mechanical change. Hormonal change को जो काम करती है, we are going to talk about, and the mechanical change, stronger and stronger contraction. Mechanical change also leads to the more powerful and strong contraction of the uterus. So first we talk about the hormonal factors. What are the hormonal factors? What are the hormonal balance which leads toward more and more contractility toward the uterus? We have discussed the functions of estrogen and progesterone.
Progesterone is the hormone which is opposite to this excitability and contractility. It reduces the excitability and contractility of the uterus. Estrogen is causing, it has got oxytocic effect. It causes contraction. Anything which causes the contraction of the uterus, that is oxytocic. ऑक्सीटोसिन को नाम इसलिए कहते हैं that causes the contraction of uterus. Anything which causes the contraction of uterus, that is oxytocic effect. For example, a drug argometrine, which is the oxytocic drug, which causes the contraction of the uterus. So estrogen is oxytocic. It increases the excitability and contractility of the uterus. Both hormones, we had seen the graph, आपने पहले lectures में graph देखा हुआ. Both hormones are increasing throughout the pregnancy, but they are balanced. This estrogen causes contractility, and this progesterone opposes this, and this balance is maintained for just Braxton Hicks contraction throughout the pregnancy. Throughout the pregnancy, estrogen to progesterone ratio is balanced. EP ratio हम कहते हैं, estrogen to progesterone, E over P. EP ratio is in favor of weak contraction only. Estrogen causes contraction, but they are weak contraction. Progesterone is inhibiting it. After about 30 weeks of the pregnancy, हम ग्राफ दोबारा देखेंगे. There is estrogen continues to increase, but progesterone increase is reduced. That is, the progesterone reaches a static level, a plateau level. That is, further increase is not there. So what is happening? Estrogen continues to increase, but progesterone is static. It is plateau there. So their EP ratio is increasing. So it is in favor of E, that is the contractile hormone. Oxytocin hormone becomes more, and the contraction gradually, it becomes more and more excitable. EP ratio, E over P ratio is increased, and contractility progressively increases because E is increasing. So this is the contractility is increasing, and labor begins when this contractility, when the progesterone inhibition is overcome by the increased level of estrogen. जब very strong contraction, labor contraction हम उसको कहते हैं, तो first very strong contraction which leads to the dilatation of the cervix, and this further increases the next contraction. इसको labor contraction कहते हैं. Positive feedback contraction, a contraction leading to stronger contraction, this is labor contraction. If very strong contraction occurs and next contraction is not stronger than this, the first one, this is not labor. Labor contraction will be only that contraction which leads to a stronger contraction. जो बाद में आने वाली second contraction, third contraction, that gradually increases. Those are the labor contraction. So labor begins when the progesterone inhibition is overcome by the increase in the level of estrogen. This graph we have seen, that is the, इसको आप भूल गए, we are concerned with these two hormones, that is blue one is estrogen and black is the progesterone. So both hormones, they are increasing, they are being produced from the placenta. शुरू में ओवरी से आ रही हैं, corpus luteum, they now placenta से पैदा, they are balanced, they are increasing, but you see this is overtaking. Estrogen after about 28-30 weeks के बाद the estrogen is more increasing as compared to progesterone. ये ऊपर चली गई है, पहले ये नीचे थी, and it is toward the end of the pregnancy, 36 weeks of the pregnancy पे it has static, इसका plateau आ गया, but estrogen continues to increase. The gap between estrogen and progesterone ratio, जिसको हम EP ratio कहते हैं, that has increased. So contractile hormone has increased, and inhibiting hormone is static, वो कम हो गई है. So that leads to more contractile, more powerful contraction leading to labor contraction. ये भी वही ग्राफ है. Both are increasing. वो तो estrogen बढ़ गई है, इसने सीधा सीधा ग्राफ दिखा दिया है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है as compared to progesterone. तो एक और ग्राफ से. So this hormonal factor causes more contraction. इसको मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ. This is estrogen to progesterone ratio, increase in EP ratio is responsible for the onset of contraction. Oxytocin is not responsible for onset of contraction, onset of labor contraction. This labor का शुरू कैसे होता है? It is not oxytocin. Oxytocin comes after the labor has already begun.
वो पहले शुरू हो चुकी होती है. Then baby is pushed into the cervix और cervix की irritation causes oxytocin. Oxytocin further increases this labor process but helps in the labor process. That is not absolutely necessary. पहले भी कहीं जिक्र with the when we were talking about if मेरे endocrinology के lecture अगर आपने सुने हैं, oxytocin के function I had discussed, that is oxytocin is not absolutely necessary for the this labor. Labor can proceed without oxytocin, but it will be prolonged. Oxytocin is very helpful during for the delivery. Onset of labor is because of EP ratio. Estrogen labor को शुरू करवाती है. And then when labor has started, labor contraction जिसको मैंने कहा labor contraction कौन सी होती है? When one contraction leads to further stronger contraction. Third contraction is stronger than the second one. Fourth is stronger than the third one. So this is the positive feedback cycle and positive feedback increase in the contraction. These are the labor contraction. अगर ये contraction शुरू होके भी if sixth contraction is weaker than the fifth one, then labor will fade away. ये भी फेड हो सकती है. पहले लेबर शुरू होके बाद का स्टॉप हो जाती है. अगर नेक्स्ट कंट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो तो ये फेड away. तो लेबर स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ ईपी रेशियो. लेबर उससे शुरू होती है, देन ऑक्सीटोसिन भी आ जाती है. Oxytocin has been proved to be involved in the increased contractility of the uterus. हमने देखा हुआ है, उसकी रीजन पहले भी कहीं डिस्कस. Oxytocin receptor in the uterine muscle they increase in the later part of the pregnancy. ये भी देखा गया है. मसल में uterine muscle जो बढ़ रहे हैं throughout the pregnancy, लेकिन उसमें ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ज्यादा नहीं होते. But towards the end of the pregnancy, last part of the third trimester के बाद उसमें towards the end of the pregnancy, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर उसमें बढ़ते हैं. अब ऑक्सीटोसिन को काम आने वाला है ना. अल्लाह पाक ने ये निज़ाम रखा हुआ है जो हमने पिछले लेक्चर में हमने कहा, कहते हैं अल्लाह ने एक निज़ाम कायदे के मुताबिक रखा हुआ है. उसके लिए एक अंदाजे के मुताबिक हर चीज रखी है. तो दी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर दे इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. पहले नहीं होते. ऑक्सीटोसिन हो भी तो कुछ नहीं कर सकती. तो टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी अगर ऑक्सीटोसिन होगी तो वो काम करेगी. पहले अगर ऑक्सीटोसिन किसी वजह से हो जाए, यू नो ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग फीमेल सेक्स. When male and husband and wife meet, female sex or orgasm of the female causes the production of oxytocin. This doesn't cause this onset of labor. उससे पहले because there are no receptors. Receptors कम है. तो these receptors increase towards the end of the pregnancy. उस वक्त oxytocin आएगी तो then pregnancy ज्यादा strong contraction होगी. Rate of oxytocin secretion has been seen to be high at the time of the delivery. ये तो आसान सी बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे. Dilatation of the cervix, oxytocin को जब हमने डिस्कस किया था, it is the irritation of the cervix, dilatation of the cervix with the head of the baby, presenting part of the baby. और breech भी कभी होता है, उल्टा भी होता है, लेकिन उसको presenting part है. Usually it is the head presenting part. अगर breech हो, buttocks हो, तो they also dilate the cervix. Irritation of the cervix that leads to the more oxytocin production. Absence of posterior pituitary, अगर किसी में ना हो, ऑक्सीटोसिन ना हो तो लेबर हो जाती है, but it is prolonged. So oxytocin ये प्रूव कर रही है oxytocin is helpful in the delivery of the baby. और experimentally we have seen that if you irritate the cervix with the instruments, किसी भी animal के या delivery के दौरान भी, if you irritate the cervix with the instruments, it has been seen oxytocin release and increase. और इसको इस्तेमाल किया जाता है. इस experimental irritation or stretching of the cervix increases the production of the insulin. किसी में labor proper proceed ना हो रही हो ना, what gynecologists do, they कहा दी ARM उसको कहते हैं. शायद यहाँ लिखा हुआ, मैंने आगे कहीं लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखा हुआ तो आप देख लेते हैं. That is this gynecologists they call the artificial rupture of the membrane. As you know, baby is in the amniotic sac. उसके अंदर जब डिलीवरी होती है, it is not the head coming out, it is the bag coming out. पहले तो membrane आती है fluid से भरा हुआ, baby तो उसके अंदर है, पीछे. तो what they do, they cause the rupture of this membrane. bag को फाड़ती हैं. फाड़ने से क्या होता है, fluid निकल जाता है, head touches the cervix. cervix को जब टच करेगा, it irritates the cervix and it causes more production of oxytocin. The ARM, artificial rupture of membrane, is helpful in the progress of the delivery. आम नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है. यह डिलीवरी प्रोसीड करता है तो पहले बैग फटता है and delivery then the labor तेज हो जाती है.
So this oxytocin is helpful during labor. ये तो कौन कौन से हमने EP रेशो की बात की, देन ऑक्सीटोसिन की बात की, ऑक्सीटोसिन इज हेल्पफुल. देन फीटल हार्मोन्स. व्हाट आर फीटल? फीटल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो भी तो डेवलप कर रहा है. Fetal pituitary is also producing oxytocin, वो also contributes. So fetal posterior pituitary produces large amount of oxytocin, and that is also. Fetal adrenal cortex. Adrenal cortex से lot of cortisol is produced, and cortisol का भी effect है on the contractility of the uterus. वैसे तो weak effect है, but the level of cortisol produced by the fetal adrenal cortex बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज एंड्रोजन प्रोड्यूस करने हैं फॉर दी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए फ्रॉम दी प्लेसेंटा, तो उसके साथ कार्टिसोल भी पैदा होती है विच इज ऑक्सीटोसिक. वैसे तो वीक ऑक्सीटोसिक है, लेकिन वेरी हाई लेवल कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन द प्रोसेस ऑफ दिस कंट्रैक्शन. देयर आर प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम द फीटल मेम्ब्रेन्स and toward the end of the pregnancy, which also helps the contractility. तो fetus से fetal oxytocin भी और fetal cortisol भी और कुछ prostaglandin भी in fetal membrane से पैदा हो रही हैं, which are causing the more contraction of the uterus. So ये भी help करती हैं. So ये हुआ hormonal factor. The hormonal balance toward the end of the pregnancy is in favor of more contraction and that more contraction occurs and positive feedback cycle starts, and this causes the more and more powerful contraction, labor contraction जिसको हम कहते हैं. Then दूसरा factor जो mechanical factor है, what is that? Stretch of the uterine muscle. Any smooth muscle, if it is stretched, ये तो property है उसकी, that will contract. उसकी कंट्रैक्टिलिटी, अगर ज्यादा स्ट्रेच करेंगे मोर कंट्रैक्टिलिटी. विद द एडवांसिंग एज ऑफ द प्रेगनेंसी मोर एंड मोर साइज ऑफ द बेबी and this causes more and more stretch of the uterine muscle. So stretch of the uterine musculature, stretch of any smooth muscle or muscular organ leads to the more contractility. ज्यादा बढ़ रहा है यूट्रस तो more contractile होता जा रहा है. हार्मोनल बैलेंस भी उस फेवर में है और ये मैकेनिकल बैलेंस भी उस फेवर में है. एंड द मूवमेंट ऑफ द फीटस अगर है देन द इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन भी होती हैं. जैसे मैंने कहा कि वैसे भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंट्रैक्शन, ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन होती हैं. तो अगर बेबी के मूवमेंट हो तो उसमें कंट्रैक्शन ज्यादा बढ़ती हैं. लेबर में नहीं कन्वर्ट होती आम प्रेगनेंसी में, अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में, लेकिन कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीजेस विद द मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ द बेबी. अगर वो मूव करता है तो अंगड़ाई लेता है एग्जांपल, तो इट कॉजेस द मोर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, बट दैट इज नॉट वेरी स्ट्रांग. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द बेबी फीटस इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन कॉज करती है एंड फर्दर फास्टर ग्रोथ. लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ग्रोथ फास्ट होती है एंड मोर स्ट्रेच ऑफ द यूट्रस टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉजेस मोर स्ट्रांग कंट्रैक्शन. तो ये मैकेनिकल फैक्टर है कि स्ट्रेच जितना ज्यादा यूट्रस होता है और ज्यादा स्ट्रेच तो टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी होता है ज्यादा डेवलप एंड इट कॉजेस. और इसी वजह से अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो, दो फीटस हो, छोटे होते हैं दो फीटस जब भी हो तो आमतौर पर वो आम नॉर्मल फीटस से उनका वेट छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी दो फीटस दे विल कॉज मोर स्ट्रेच. उनका एब्डोमेन इतना ज्यादा, दो फीटस जब हो, मल्टीपल अगर ट्विन हो या ट्रिपलेट भी कभी कभी होते हैं, तो डबल दो फीटस क्वाइट कॉमन, इतना ज्यादा अनकॉमन तो नहीं है ना, नॉट वेरी अनकॉमन हम कह सकते हैं. ट्विन प्रेगनेंसी उसमें ईडीडी कैलकुलेट करते हुए अर्ली होती है because more stretch, दो फीटस होने की वजह से यूट्रस is tremendously stretched and this favors the more contractility. So twin pregnancy more stretch is causes early birth. उनकी EDD expected date of delivery जब भी कैलकुलेट करते हैं, दो फीटस हो तो वो नॉर्मल के नहीं होता कि वो उसको जैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी अर्ली होती है, एटलीस्ट 2 weeks अर्ली हो सकती है. So this is the because of this mechanical factor. So this mechanical factor, that is stretch or irritation of the cervix. अब जब stretch हो रहा है
यूट्राइन इरिटेशन, अभी हमने थोड़ा सा जिक्र किया, इरिटेशन ऑफ द सर्विक्स, लोकल मैकेनिज्म, इरिटेशन ऑफ द सर्विस, एक तो हार्मोन की बात हमने की है, हार्मोन, इरिटेशन ऑफ द सर्विस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, उसका लोकल इफेक्ट भी है, इरिटेशन ऑफ एनी मसल विल सेंड द इंपल्सेस टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस टू पोस्ट दैट लोकल मैकेनिज्म फॉर द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन locally. So the irritation of the nerves in the cervix initiate the local response to cause the more powerful contraction of the body of the uterus. Cervix अगर stretch हो रही है, ऑक्सीटोसिन वाला काम भूल जाएं, ये local काम भी है, यहाँ से nervous signal go to the body of the uterus for the more forceful contraction. So ये mechanical factor इसमें भी है. So the ARM जो मैंने जिक्र किया वो यहाँ पे जिक्र आ गया कि when the ARM, that artificial rupture of the membrane, that causes more irritation of the cervix, और local mechanism भी ज्यादा ऑपरेट होता है और ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा होती है. So ARM is helpful in induction of the labor. अगर लेबर प्रोसीड ना करियो, ARM करते हैं, artificial rupture of the membrane, वो दोनों तरीकों से काम करती है, that causes more irritation of the cervix, और ये local mechanism, nervous mechanism, local feedback mechanism, cervix से body of the uterus को more forceful contraction occurs, plus oxytocin also is more produced because of the more irritation by the head rather than the that fluid bag. Fluid bag तो इतना irritant नहीं है, bones of the head वो ज्यादा irritant होंगी, ARM करेंगे. So the maybe local myogenic transmission of the signals from the irritation of the cervix will cause the contraction of the body of the uterus, जो अभी हमने जिक्र किया है. So this causes more and mechanical factor. This contributes toward the more contractility and the this labor contraction starts. एक्चुअल होता क्या है, मैकेनिक्स ऑफ द लेबर क्या है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ द लेबर. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द लेबर, जिसको हम मैकेनिक्स ऑफ द पार्चुरेशन और मैकेनिक्स ऑफ लेबर के नाम से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर फॉलोइंग मी. अगर बात समझ आ रही है, इफ यू हैव गॉट सम क्वेरी एंड क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, उसमें पूछ लें. और फिर रिक्वेस्ट यही है कि इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बहुत से स्टूडेंट को शेयर करें. आपका सदका जारिया होगा, आप शेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में. मेरा कोई मकसद इसमें और नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वी हैव गॉट टू अर्न समथिंग. नो, हमारी तो ऑडियंस लिमिटेड, अ फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स है इन पाकिस्तान, उनके हम कितना उनका. मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम, आई एम 71 ईयर्स ऑफ एज, 71 को हो गया हूँ, एंड ये हमारा सदका जारिया हमारे मरने के बाद हमारी जारी रहे, और आप भी इसको शेयर करेंगे, आपका भी कंट्रीब्यूशन होगी फॉर दिस सदका जारिया. तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. हमारी नेक्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ लेबर और पार्चुरेशन हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.